is a part of the first chapter where we discuss. Okay. So our hierarchy for the any executions of the assignments is firstly we are appointed by the someone. Okay. When we get engaged, we discuss about the scope of the work, what is the asset, how much time frames are available, under which standards we have to do valuations, what is the purpose or intent of the valuations, who will use the report, who will not use this report. Okay. Then we are asking for the document required to make a process of the valuations. We are making the site inspections. We are collecting the data. We are discussing with the asset related to the subject with the management. We are trying to identify macro identifications and micro identifications related to the subject assets. We are collecting the data from the market survey. So preliminary three sources of data we have. One data that is provided by the client. Second data that we have collected from the site inspections. Third data that we have collected from the market survey or whatever the data bank we have developed based on the year on year and our experience. So mixture of these three data, we are analyzing the data during the inspections and market survey. And according to the data availabilities, purpose of valuations, we are adopting the approach by which approach we are doing the valuations. And under the approach, which are the methodology or techniques that is the best suitable to the assets. And under the approach and methodology, whatever the calculations parts are there, numerics parts are there, we are performing that and reaching at the conclusion. That is our estimations on a value or opinion on a value. Okay. So simply first questions, what you demand from your client to perform a valuation process. ओके सभी को कोई भी बोल सकता है आप अपने क्लाइंट से क्या मांगोगे Fixed asset register. Fixed asset register. What do you mean by the fixed asset register? Detailed down total machinery installed in the unit Okay. and a So year in which it was normally installed. company maintain the asset register which has been purchased for the operational day-to-day operations. Okay. That may be a various class of the machinery. That may be a tangible asset or intangible asset. Under the tangible asset, they may record land, building, plant and machinery, office equipment, vehicle, fixed and furniture, electrical installations, or maybe a differ as per the specific industries. If they have any software or intangible assets, they also maintain in the fixed asset registers. Okay, so we can demand for the fixed asset register. Then Copies of invoices. copies of invoices for the supporting purpose. Okay, then List of machinery, balance sheet. capitalization year, capitalized cost, quantity, specifications, everything. okay. So list of machinery that may be with a technical specifications. Capitalized years, quantity that may be also reflect in the fixed asset registers. Yeah, date of the put in use. From the invoices, you may get a year of purchase. Okay, then Capacity utilization and total capacity of the equipment and machinery. installed capacity and capacity utilizations, which is related to the performance of the assets. And also the economic viability. This is also connected to the economic viability. Okay, economic viability. Normally, when the project is new, may be probable we get the techno-economic viability study reports. But if plant is older one or running with more than 2-3 years, may probable always we are not getting the techno viability studies. Yeah, but initially, if plant is a 1 or 2 years old, may company have do techno-economic value study that may be support to us. Okay. So for verification or identifications, preliminary, we are required the fixed asset register. By fixed asset register, according to I will make the inspections. Yeah, we can demand for the list of plant and machinery equipment with the technical specifications that
also include the year of purchase, model, capacities, put in use, and all other related details that we require for the valuation process. If both are not available, many times for the small scale companies, then we have to go for physical inventory, where we have to go to machines and have to take a records, okay, which machinery is available on the sites. When you're making the inspections, two identifications are required. One is a macro identification, second is a micro identifications. Anyone, what you mean by the micro identification? Numbers, Okay. serial number of the plant, machine, Mhm. uh, horsepower of the motors. Mhm. Okay. In simple word, Capacity. micro identifications, matlab, you are collecting data related to the asset, particularly data related to the machinery. Okay, name of machine with a little bit descriptions. You are collecting the model, type, serial number, name and year of the manufacturer, size, capacity, material of constructions, age, that you are calculating the age based on the year of purchase or year of put in use, installations, capitalizations, foundation is there or not, detail of refurbishment or modifications are done or not, how much energy required to operate, how it is driven, how it is operating, details of drives, and may probably collect the record of maintenance or visual inspections, any vibrations, any crack, any noise are there, how operator efficiency that you make are collecting during the site inspections. So these are your collecting data related to the asset. It is your micro identifications. On the site, you are going to machines and collecting details, data. Okay. Macro identification is related to the, you are collecting data related to the company about the product, about the byproduct, process layout, installed capacity, annual productions, availability of the raw materials, availability of the utilities, about the quality of the finished product, uses, how much number of shift operated, interdependencies for the operations or maintenance, or there is a allocated maintenance cost are not there, fixed over turnover ratios, financial ratios you are covering, profitability ratios they made you get from the annual reports or from the balance sheets, and you are collecting the regulatory measures. What do you mean by the regulatory measures? Effluent treatment plant, law related. Yeah. So, whatever the statutory permissions required from the component authorities or license or inspections required, regular inspections required, interval inspections are required, that company is following or not, okay, which is related to the statutories for the operation purpose. Okay. So you are collecting the regulatory measures. So one, you are collecting data related to the asset. You are collecting data related to the overall company. Okay. So micro identifications related to uh, overall company data, install capacities, product, finished product, financial ratios. Okay. There are the three approach: cost approach, market approach, and income approach. When you are adopting the cost approach or market approach, you find that it is best suitable. At that time, micro data, micro identification will help you. When you are going to adopt a income approach to do valuations, at that time your macro identifications will help you. Okay, so we are not pre-decided. Okay, we will do the valuation by the micro market approach, cost approach, or income approach. We are making the inspections, we are collecting the data, we are identifying the assets, and based on the characteristic of assets, later on we are decided. Which approach?
suitable. Sir, no voice. Yeah, I think so. There is some internet connectivity problem. Sanjay sir will be joining within 1 or 2 minutes. शेखर सर आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए. Yeah, now it is okay. Yeah. Sorry, ये थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था लगता है. Yes. So audible? सुनाई देता हूँ मैं? Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir, audible. Sir. हाँ. Okay. So when you are making the visual inspections, we are collecting detail of the machine with the technical specifications. We have to try with the collect the data from the nameplates. We have to make the conditions, wear and tear or deteriorations. We have to check the working atmosphere, surrounding environments, and skill of the operators. We have to check the uses of the assets or number of shift under which it is operated. We have to collect the status and record of the repair and maintenance. We have to check the statutory permissions, license with its implementations. We have to check any asset based on the lease, contract, or rent base. Any asset surplus, scrap, or non-productive machineries, or any asset that is we observed in the ideal condition. It can be used with or without the repair. Okay, so if any asset that we are observing the non-working conditions, so why it is non-working conditions? It is proposed to scrap, or it is not required during the process, or it is under the maintenance. So after the maintenance, it will be reused in the process or not. These are the preliminary data that we have to collect during our site inspections. So whatever the data we collect, we can make the groups that may be a process or production machinery. These are the core machinery that used for the production purpose. Okay. Then utility machineries that are used to support the core or production machineries. Okay. Then electrical installations that required for the charging, electric charging of the any equipment or machineries, control systems and a panel that required for the uh, in a process or in a step flows, in a safe flow operations of the machineries, piping that may be required for the water, steam, or other liquid materials, foundations, structure support that may be a steelwork, catwalk, ladders, platform that required for the operations or that required for the climb, that required for the maintenance purpose or whatever. Material handling equipment that may be a locomotive, yeah, movable assets in form of the forklift, loader, conveyor, cranes,
laboratory and testing equipments to check the quality of the raw materials and finished goods or intermediate goods, workshop tools that require for the day-to-day repair and maintenance purpose, special equipments that may be a jigs, fixer, mold, tools, and software and IT equipments that required for the designing or in conjunction with the machines or data storage of the equipments. Yeah, to maintain the record of the operations of the machines. Okay. So once we collect the data, we have to classify according to the class of the machines that help you in a valuation purpose, that help you to consider or not consider purpose, that will be help you to provide the hierarchy of the priorities. Okay, so whenever I am starting, I will mostly I concentrate over the do the valuations of a process machinery or utility machinery first, because their proportionate in a total value, their contributions in a total value will be a much higher compared to other. So life or balance life of the core machinery will also use or also become a base for the other assets. Okay. So we can classify the assets. Then what is the importance of collections of the all the technical specifications? Okay. Here we are understanding by one example. Okay. You have provided the data, okay, 700-liter SS reaction vessel with a stirrer. So this much data is enough for the valuation process or not? Okay. So first you have to understand what you mean by the 700-liter. It is a batch capacity or water capacity of a vessel. If it is a batch capacity, then water capacity may be a higher than your batch capacities. If it is a assets, then which types of assets it is? 304, 3016, 3016L. Okay, because costing of the each assets will be a differ. If it is assets, then what is the plate thickness of the material used? It is a 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, because costing again it will be a worry. It is a vessel. That is a jacketed vessel or non-jacketed vessel. Okay. It is a stirrer. Then what will be ammo material of construction of the stirrer? Yeah, how much power required? Yeah, other accessory required for the stirrer. Yeah, which types of stirrer? After all these parameters will affect its costing. So we have to remain a precise in our data collections of the asset, specifically all the technical specifications of the asset that leads our valuation process toward the precision, yeah, toward the accuracies. Then discrepancies. Okay. So when we are going to site inspection, we have provided list. We are making the inspections. So many times there is a absence of the asset which are available in the listing. Yes, there are some assets which are available in the list, not available in list, but also available in the sites. Maybe however site happen. If there is a we have provided 100 number of machinery as a list, but when we are making a site inspection, there's 102 assets. Okay, so two assets which are not available in the listing. Yeah, we find that against the 100, there is a 98 assets. So two machines which is available in the list, not available on the sites. So that discrepancy arise during the site inspections. So what's probable reason of that? So comparison of the asset with the company record made for the preparation of the list. So first asset is physical exist on the site, asset available है, but not in the recorded reference. जो हमें लिस्टिंग दी गई है फिक्स एसेट रजिस्टर या टेक्निकल लिस्टिंग दी गई है वहां पे नहीं है. तो उसके रीजन क्या होते हैं? So maybe a asset manufactured in the company's own premises using the
ओन लेबर एंड मटेरियल्स, कंपनी ने खुद ही मटेरियल्स, अपने मटेरियल अपने लेबर से इनबिल्ट किया है। या मैनी टाइम्स एसेट में बी कन्वर्टेड या मॉडिफाइड, जैसे लार्ज टैंक को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल टैंक्स में, ठीक है? या कॉस्ट ऑफ द एसेट ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, दे आर नॉट, जो मशीनरी खरीदी दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड, वो बोले ये तो डे टू डे खर्चा है, सो कॉस्ट ऑफ द एसेट दे ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। या एसेट टेकन ऑन द लीज या रेंट या कॉन्ट्रैक्ट पे अवेलेबल है, सो इट इज एसेट नॉट बिलोंग्स टू द कंपनी बट दैट इज अवेलेबल ऑन द साइट बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, लीज और रेंट्स। So may probable, may other reason also, but these are the prime reason. कि asset is available on the site, but not available on the listings. Same asset existing in the accounting reference, but physically not there. भाई लिस्ट में तो मशीन है, बट साइट पे मशीनरी नहीं है। Okay. So or asset already scrapped out or not in use or laying outside of the factory premises for the repair. बेच दी है, स्क्रैप्ड आउट की है, नॉट इन यूज है, स्क्रैप यार्ड में पड़ी है, या रिपेयर के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसिस से बाहर गई है। एसेट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट एंड मनी इज रिलीज्ड, सो इन द मिसलेनियस रिसिप्ट। आइटम रेवेन्यू नेचर इज कैपिटलाइज्ड। ओके, कंपनी ने लिखा है भाई अपने अकाउंट में 100 मिलियन कॉपर वायर पे यूज हो गया है। ओके, जो एसेट रेवेन्यू नेचर थी उसको कैपिटलाइज किया है इन लोगों ने। या ऑयल खरीदा था तो ऑयल डीजी सेट में चला गया या ट्रांसफार्मर में लगा दिया, तो दैट इज नाउ नॉट अवेलेबल ऑन द साइट बट स्टिल दैट इज इन अ लिस्टिंग कि भाई कंपनी ने 1000 लीटर ऑयल खरीदा था। देन एसेट गिवन ऑन द रेंट, कंपनी ने अपनी एसेट को रेंट पे दिया है या लीज पे दिया है या सब कॉन्ट्रैक्टर के पास में आउटसाइड ऑफ द एसेट्स। कंपनी की खुद की एसेट is based on the rent or lease to the someone else to use. Okay, so these are the main reason, that is a probable discrepancy between the listing and physical inspections. Data or listing inventory made during the physical inspection. So at end of the end, okay, we have to make a list of the installed machine, uninstalled machine, laying at the site with the physical or visual inspections. Comparison of the physical listing with the fixed asset register or technical listing, whatever provided to us. Discuss on the discrepancy, available on site, not available in the FAR, or available in, not available on the sites. Final listing with the addition deletion, identifications of the productive, non-productive, scrap, surplus, off-balance sheet asset, or the machinery that can be used or with or without repair. Okay. So after making the inspections, we have to make a listing. Okay, these are the list of the asset which I have to value. Okay. That may be a productive asset or non-productive asset, that may be a scrap or surplus asset, that may be off balance sheet asset, that machine may be a ideal asset that can use with or without repair. Yeah. Any doubt or any questions? Anyone? No. Yeah. Any question? No. हाँ, किसी और को? Okay. Then productive asset, non-productive asset, surplus asset, and off-balance asset. So what do you mean by the productive asset? Anyone? All the machines are Those assets, productive assets. Productive जो asset is मशीन the one asset चलती which which है is are वो directly पैसे used in पैसे production of करती the है, manufacture of the product of the company. Yeah.
ओके, और कोई? दो बंदे बोल रहे थे, एक तो सर का सुना हमने, गुरमीत सर का। प्रोडक्टिव एसेट मींस? हाँ, जो मशीन चलती है जिससे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रोडक्टिव एसेट। या जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इट इज अ प्रोडक्टिव एसेट। देन व्हाट यू मीन बाय द नॉन प्रोडक्टिव एसेट? Surplus utility, assets which are testing not, which machinery, are lab, idle. एनीवन, एक जन साथ में नहीं। हाँ बोलिए। जो कंपनी में फालतू जगह रोक के बैठा है नॉन प्रोडक्टिव है। नहीं, वो सरप्लस एसेट है। So, for example, lab, that is a testing equipment, they are non-productive. Yeah. Okay. So normally those assets we are not part of the revenue generations, but it is a part of the supporting assets that we can classify as a non-productive assets. Okay. So productive assets are held or used in the productions of the goods and services. It is the asset with ability to generate profits and cash flows. So majorly we can say all the core assets, production machineries, yeah, process machineries and utilities are our productive assets. Okay. What do you mean by the non-productive asset? Which does not produce any output but held or used for the supporting facility in the productions is a goods and services. Right? utilities and जैसे lab. लैब इक्विपमेंट, या जैसे एक वेइंग स्केल है कंपनी के गेट के पास में, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, वेइंग स्केल नहीं होगा तो भी प्रोसेस तो रहेगा ही, प्रोडक्शन चालू ही रहेगा, बट इट्स हेल्प पर कितना मटेरियल आया कितना मटेरियल गया। सही है। Testing जैसे कुछ equipments. या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कुछ लोकोमोटिव्स है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, वो नहीं होंगे तो भी प्रोडक्शन तो रहेगा, बट प्रोडक्शन आपके यूटिलिटीज एंड कोर मशीन के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो Testing equipments. टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। सही है। सो Ranjit sir, what about DG set, डीजी सेट मतलब इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट विच non-product? इज अ पार्ट ऑफ द सपोर्टिंग फैसिलिटी। भाई लाइट जाएगी तो डीजी सेट काम आएगा। Okay, सही है। but compressor will be also supportive. नहीं, कंप्रेसर इट इज अ कंटिन्यूइंग फंक्शन ना, अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो एयर नहीं रहेगी, हाँ या तो वॉट प्रोसेस एवर नहीं द होगा। यूज ऑफ दैट, उससे प्रोसेस नहीं होगा। हम्म। इट इज अ पार्ट ऑफ द यूटिलिटी बिकम्स कंप्रेसर, बॉयलर, कूलिंग टावर। ओके। एक सवाल था कि टेस्टिंग इक्विपमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहा है, अपनी क्वालिटी All हाँ, सुधारने में utilities are अपने को हेल्प productive कर asset. रहा है। या बट इट इज अ सपोर्टिव एसेट। नहीं, The सपोर्टिव utilities है, are बट अगर वो नहीं होगा तो हमारा रिजेक्शन बढ़ेगा, तो हमारा रेवेन्यू नहीं आएगा, हमें लॉस होगा। तो मतलब एक थोड़ा सा बाउंड्री पे हो सकता है वो, हाँ हाँ, कि नहीं अगर मतलब प्रोडक्टिविटी। देखिए सिंपली दोज हु आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसके बिना प्रोडक्शन अटक जाता है, नहीं होता है, इट इज अ प्रोडक्टिव एसेट। ओके, ऑल द अदर एसेट विच इज द सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स। ठीक है सर, सही है, ठीक है। आपके लैब इक्विपमेंट में बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सही है। जैसे भाई रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट या फिनिश गुड बना, विदाउट अप्रूवल ऑफ द रॉ मटेरियल्स इट कैन, सॉरी, विदाउट अप्रूवल फॉर द लेबोरेटरी टेस्टिंग इट कैन नॉट बी डिस्पैच। बट लेबोरेटरी इक्विपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हुआ उसका सपोर्टिव है, भाई सही है आगे जाने दो। ओके, सो विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट that held or used for the supporting facilities, सपोर्टिंग फैसिलिटी के लिए हेल्प किया। जैसे मैंने बोला कि भाई वेन ब्रिज है आगे कंपनी के गेट पे, दिस नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, बट वो वेन ब्रिज नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि कितना गुड्स आया कितना गुड्स गया। सो इट प्रोवाइड सपोर्टिंग फैसिलिटीज। डीजी सेट है, ओके, दैट इज अ स्पेयर डीजी सेट या बैटरी बैकअप डीजी सेट। विदाउट एनी इंटरफेरेंस डीजी सेट इज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। इट इज सपोर्टिंग, भाई जब भी लाइट जाएगी तब इट विल बी अ फंक्शन वेन एवर नीडेड। ओके, नाउ वन मोर एसेट, दैट्स अ सरप्लस एसेट। एनीवन, व्हाट यू मीन बाय द सरप्लस एसेट? flow देखिए process there में is जो asset यूज नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं।
हाँ मतलब ये ठीक बात है, पर बाकी कुछ और भी है। Sir, it could be the spares The maintained by the spare company नहीं, motor. for the यार process. भी नहीं। Those देखिए machineries which does सरप्लस, not come under productive, non-productive. नहीं, देखिए सरप्लस एसेट तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट ही है, सही है। तो Inspections in it. नहीं, asset which is not essential for the operation of the business by the company or the production of the goods services at present even in future, Okay. आज भी यूज नहीं हो रहा है और फ्यूचर में भी उसका कोई यूजेज नहीं है, देन ऑल्सो कंपनी इज हेल्डिंग इट, इट इज अ सरप्लस एसेट। सही है। ठीक कंपनी सर। के पास जो भी एक्स्ट्रा एसेट्स है दैट इज नॉट इन यूज फॉर द प्रोडक्शंस, और फ्यूचर में भी उसे यूज नहीं करने वाली है, दैट्स बिकम अ सरप्लस एसेट। सो नॉर्मली मैनी टाइम्स व्हेन मर्जर एंड एक्विजिशंस आर अकर, वे दो कंपनियां मिल जाती। Okay, and due to the day-to-day demand is a color printer only. So company dismantle black and white printer from the operations and put, and due to the color printer demands, company install the color printer. So this black and white printer become a surplus asset for the company. ओके, जब तक सोल्ड नहीं करती या स्क्रैप आउट नहीं करती, तब तक इट इज अ सरप्लस एसेट फॉर द कंपनी which are not used in the present and even in the futures, because there is a no demand of such a types of product which is produced by the assets. Okay. So you can also find comparison of the asset held by the company and the asset required for the install capacity will lead to identify of the non-productive or surplus assets. Many times you will also find the surplus capacity. Okay. Just like I put a plant of the 100 ton per day of the paper plant. 100 ton per day का मैंने paper plant डाला. Due to the government policies, yeah, due to the awareness, demand in the market, it is for me now it is a 40 ton per day only. 100 टन का प्लांट मेरा 40 टन पे ही चल रहा है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आ गए, पेपर की डिमांड रिड्यूस हो गई है, अल्टरनेट अवेलेबल्स हो गए हैं। ओके, एंड दिस डिमांड will never increased in a future also because alternative are available. तो मेरे 100 टन की कैपेसिटी में 40 टन ही मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरे जो बैलेंस कैपेसिटी है अंडर द गिवन सर्कमस्टेंस एंड सिनेरियोज, 60 टन मेरी सरप्लस कैपेसिटी हो गई, जो मैं अभी कभी यूज नहीं करने वाला, मार्केट ड्रिवन। ओके, सरप्लस कैपेसिटीज। सो कंपनी को प्रोडक्शन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है और उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, ओके, दैट आप व्हेन मैक्रो आइडेंटिफिकेशन स्टडी करते हो, ओके, तब ये पता चलता है। Okay. In a macro identifications, we have note down one point: installed capacity and capacity utilizations. Okay. When you study this, so many outcome may possible you find. भाई इंस्टॉल कैपेसिटी 100 टन की है और जो यूटिलाइजेशन हो रहा है इट इज अ 40 टन ओनली। व्हेन यू क्वेश्चनिंग व्हाई, भाई यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है, रो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, मार्केट डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी फिनिश गुड अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड नहीं है, ये बहुत सारे रीजन आपको पता चलेंगे कि भाई वाई एसेट इज अंडर यूटिलाइज्ड। मशीन सारे अच्छे हैं बट मार्केट में ही डिमांड नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटीज या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
अवेबिलिटी ऑफ द लेबर नहीं है, अवेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल नहीं है, इसीलिए वी कैन नॉट प्रोड्यूस। सही है। सो इट हेल्प इन अ वैल्यूएशन प्रोसेस ऑल्सो, दिस इनपुट्स आर यूजफुल इन योर reaching your conclusions. At present, car productions are too high. Market नहीं है. हम्म, सही है। Okay, many obsolete assets also are there, ना? Off balance sheet assets which are not available in the balance sheet. So those asset company held by the लीज, रेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने जो एसेट लीज, रेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे ली है, यूटिलाइज कर रहे हैं, दिस ऑल कॉल द ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स। सो productive, non-productive, surplus, and off-balance sheet assets. Identification, it is important for the valuation process also. Then जो चाहिए हमें, एज चाहिए, लाइफ चाहिए। Okay. There's three types of life and two types of age. One age is a chronological age, another age is a effective age. Life में economic life, useful life, physical life. Okay. What do you mean by the chronological age? Age. From the date of installation. Okay. No, age Anyone else? considered from the date of manufacturing. Date of manufacturing. Then okay. In a valuation of the plant and machinery, we can calculate the age from the 3 points. Chronological age. Okay. One, first, that is a year of manufacturing. Okay. Yeah, month of year of manufacturing. Second, year of purchase. Say. And third, Installation. year, not installation, year of put in use. Okay. Installations and put in use, technically both are different. Put in use, जब एसेट काम करना स्टार्ट किया, और आपके जो मतलब दोस्त आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एमईपी, वो लिख दीजिए, फॉर द अकाउंटिंग पर्पस एज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ और ईयर ऑफ पुट इन यूज। अकाउंटिंग पर्पस से डेप्रिसिएशन जब भी फाइंड करना होता है तो एज कैलकुलेटेड अकाउंटिंग पर्पज से, एज जो कैलकुलेशन होता है ऑलवेज स्टार्ट विद द डेट और ईयर ऑफ पुट इन यूज से होता है। बाकी का अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ वैल्यूएशंस। ओके भाई, वी हैव टू टेक अ केयर ऑफ year of manufacturing, yeah, we have to take care of the year of purchase, yeah, we have to take care of the year of put in use, yeah, in EC, year of erection commissioning, कहीं से भी we can calculate the age. Okay. Then what do you mean by the effective age? Okay. One is a chronological age, another is a effective age. Okay. Anyone? Effective age? That's function of maintenance. It is a function of maintenance. Okay. So it is a apparent age of the property in comparison with new property of like kind, that is a age indicated by, okay, age indicated by actual conditions of the property. Age indicated by actual condition of the property, not a chronological age from the year of the manufacturing, purchase or put in use. Okay. There are the two machines. Okay. Both are purchased in a same date, same model and everything. Okay. One machine is undergone repair and maintenance or preventive maintenance provided every month. And other machines are not providing any preventive maintenance or
repair and maintenance for the year. So both chronological age of the both are the same, but age based on the conditions will be a differ. Okay. So effective age we are finding out based on the C of a asset is a effective age. Okay, not a numbers. Okay. Any doubt? Chronological age, Sir, I have effective age. a slight confusion here regarding effective age. हाँ When we बोलिए. talk of regular maintenance, updation of the equipment, that is going to affect the future life of the asset, which means that total life will be affected. Uh, Not the age part of it. That is slightly confusing for me. I am not able नहीं, to. that is a good enough. Okay. As a valuer, okay, we always take care of the age and total useful life. Okay. And balanced life is a useful life minus age is a balanced life. What theory says, as a valuer, we have to conduct effective age plus balanced life equal to total life. Okay. Now, balanced life of the asset, again, it is based on the various parameters. देखिए मैंने दो मशीन लिए हैं आज मतलब एक ही साल पहले सेम डेट पे. एक में मेजर ब्रेकडाउन हो गया है और दूसरा में कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो बैलेंस लाइफ विल बी सेम. नो, ऑफ कोर्स नॉट. Understood. सही है. एक दो मशीन सेम ही डेट पे लिए है, एक को ट्रेन ऑपरेटर एज पर मैनुअल चला रहा है, दूसरों को अनट्रेड या सेमी स्किल लेबर अपने आप चला रहा है, तो बैलेंस लाइफ दोनों की सेम होगी? नहीं. दोनों की सेम नहीं हो सकती सर. हाँ. तो थियोरिटिकल क्या है कि एज प्लस बैलेंस लाइफ इक्वल टू टोटल लाइफ ऑफ द That's correct. balance life, may be a economic life, useful life. In a practice, what we are doing when uh, there is a good repair and maintenance, we increase the life, balance life. That is correct. That is what I do. But theory says you have to decrease the age. Oh, You have to calculate effective age after repair and maintenance, at which condition it is reached compared to the new one. Okay. New property of like kind. उसके जैसी प्रॉपर्टी जब न्यू प्रॉपर्टी कंडीशंस में कितना है. सही है. ऑफिशिएंसी, रिजेक्शन रेशियोज, पावर कंजम्पशन या कोई भी किसी भी एसेट को रिफर्बिश कर दो या अल्टरनेशन कर दो, नेवर बिकम अ न्यू वन. बट रिफर्बिशमेंट करने के बाद वो नई एसेट की कितनी है, 2 साल जैसी है हुई, 3 साल जैसी हुई, 5 साल जैसी हुई, दैट इज अ इफेक्टिव एज. और थियोरी बोलती है इफेक्टिव एज प्लस बैलेंस लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ. सही है. नॉर्मली प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, एज अगर अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो उसकी बैलेंस लाइफ बढ़ा देते हैं. थियरी सेज यू हैव टू नॉट इंक्रीज द बैलेंस लाइफ, यू हैव टू अगेन एसेस द बैलेंस लाइफ. आपको एज घटानी है इफ देयर इज अ गुड रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ओके. sir, is there a नॉर्मली numerical अगेन method to प्रैक्टिस. have that calculation, like some approximation? Yeah, Or is we it have just some approximations. May you refer the one of the book that is available in the library, but as it is not part of the syllabus, so we are not discuss here. But okay, sir. for that, you have to study the Iowa curve, survival curve, and historical investment made in the properties. कितना investment किया है और उससे efficiency curves क्या बना है, वो स्टडी करके we can find the effective age. Right, sir. Thank you. ना. Okay.
Now, But sir, for small machinery, this is not possible, no, sir. small machinery means of, देखिए, one thing is a preventive maintenance is differ one, breakdown maintenance is differ one, and regular maintenance differ one. Regular maintenance मतलब you have to keep in the operations. Okay. Preventive maintenance मतलब भाई मशीन को कुछ नहीं हुआ, then also you are providing the maintenance that affect the age. और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब जब Like मशीन oil changes बिगड़ता and है, such. मशीन बिगड़ता है तब आप रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में वी ऑल्सो टेक पार्ट्स कि भाई record of the maintenance, how maintenance are provided. Okay. Maintenance, because it affect the age and balance life. That's why we have to study. नहीं, मेंटेनेंस अच्छी है तो बैलेंस ज्यादा होगी ना। बैलेंस मेंटेनेंस अच्छी होगी तो एज कम हो गई, विल बी मोर। इफेक्टिव एज आ गई पिक्चर में, एज कम हो गई, नॉट वही तो बैलेंस गुरकर्णी लाइफ सर बढ़ मैंने गई। क्लियर किया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। देखिए, बैलेंस लाइफ इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मशीन्स, बैलेंस लाइफ इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। सही है। देयर इज अ ये वन ऑल्सो पॉइंट, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस लाइफ इज ऑल्सो depend on the availability of the raw material. आज कोई अगर सीमेंट प्लांट का वैल्यूएशन करता है और प्लांट अभी अभी डाला है, ओके, सो नॉर्मली सीमेंट प्लांट चलते हैं 25-30 साल, कोई दिक्कत नहीं होती। बट आज आप अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल स्टडी करोगे तो मैनी रिपोर्ट्स, हमारे नहीं मतलब गवर्नमेंट के मैनी रिपोर्ट सजेस्ट दैट कि भाई इंडिया में अब जो लाइमस्टोन का रिजर्व बचा है, अगर इसी तरह से यूज करते रहेंगे तो अगले 15-20 सालों में खत्म हो जाएगा, इसी रफ्तार से यूज करेंगे तो। अगर मुझे ये पता है, देन ऑल्सो आई एम गिविंग अ बैलेंस लाइफ ऑफ द सीमेंट प्लांट, नया सीमेंट प्लांट बना है उसकी मैं 25 साल लेता हूं, तो मैं गलत कर रहा हूँ, या आई हैव नॉट कंसिडर द फैक्टर। ओके। अब दूसरा ले जाओ, भाई देयर इज अ वन मोबाइल या टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट, लैपटॉप, कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड, मुझे पता है कि ये मशीनरी के हर 2 साल में या 3 साल में नया अपडेटेड वर्जन आ जाता है जो इससे बढ़िया और अच्छा होता है। मशीन भले 10 साल चलने वाला हो, बट शॉर्ट लिविंग लाइफ है, 2-3 साल में वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, तो मैं उसकी बैलेंस लाइफ 10-12 साल नहीं लग सकता। वही मुझे पता है, आई हैव स्टडीड प्रोडक्ट साइकिल, कि भाई ये मशीन 2-3 साल के बाद के कुछ आने वाला नहीं है, तो बैलेंस लाइफ अफेक्ट है ये। तो मैनी नॉट ओनली द फिजिकल लाइफ, many other parameter also affect the in judgment of the balance life. Okay. Yeah. So age, chronological age, and effective age. Same. There is a three life. One is a economic life. Okay. So it is estimated period of the time, usually stated in the number of years, that new property may be a profitable used for purpose which is it was intended. प्रॉपर्टी कहां तक या एसेट कहां तक प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है, okay? जिसके लिए लिया है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस अफेक्ट हियर, जब भी एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, ओके, नॉट ओनली दिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, इसके साथ में आपका डाउन टाइम भी बढ़ेगा, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा, तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज होगी। सही है। सो नंबर ऑफ इयर्स कि प्रॉपर्टी कहां तक प्रॉफिटेबली यूज कर सकती है,
दैट इज द इकोनॉमिक लाइफ। कब तक मशीन पैसा कमा के देने वाली है, कॉम्पिटिटिव पैसा। ओके, इकोनॉमिक लाइफ। आईवीएस के हिसाब से द टोटल पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एसेट इज एक्सेप्टेड जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर अ वन और मोर यूजर्स। कहाँ तक एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, इट इज इकोनॉमिक लाइफ। नाउ व्हाट इज अ यूजफुल लाइफ? Okay, so the physical life usually estimated in terms of the years new property actually be used before it is retired from the services. Okay, actually be used मतलब उसकी सर्विसेबल लाइफ कितनी है, कब तक, कहां तक मशीन चलती रहेगी। सिंपली सही है, चलती रहनी चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती, दिस डजंट मैटर। कहां तक ये चलेगी, कितने साल चलेगी ये मशीन। में प्रोडक्ट आउटडेट हो गया है, दैट इज ऑल्सो डजेंट मैटर, पर मशीन चालू है ना। okay, so number of years actually used before it is retired from the services। मशीनरी कब तक, कहाँ, कितने साल तक चल सकती है। या इसे ही दूसरे लैंग्वेज में आईवीएस ने बोला है, इट इज अ पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सेप्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। मशीन कहाँ तक चल, तो भाई इकोनॉमिक लाइफ छोटी होती है कंपेयर टू द यूजफुल लाइफ। और फिजिकल लाइफ क्या है कि मशीन कब तक फिजिकली अवेलेबल है, इट मे बी यूज और नॉट यूज, इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग डजंट मैटर। ओके, normally we are not taking care of the physical life in valuation process, but estimated period of the time usually stated in the number of year new property will physically endure before it nutrition and fittings to unusable conditions firmly for the physical causes. Okay, other causes may be also there. That is a functional or economic observations. तो इकोनॉमिक लाइफ कम होती है, उससे ज्यादा यूजफुल लाइफ होती है, उससे ज्यादा फिजिकल लाइफ होती है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, ओके, अप टू द 60 or 65 we are generating the income. That is our economic life. We get the retired but still we are usable, हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, तो it is our useful life. Once we get on the bed, ओके, कुछ काम नहीं कर सकते, खड़े नहीं सकते, बेड पे पड़े पड़े हैं, तो इट इज अवर फिजिकल लाइफ। ओके, कुछ काम के नहीं आते, सिर्फ बेड में पड़े रहते, खा पीते, फिजिकली डिटोरेटेड एंड फटीग। सो Very good comparison, sir. हाँ, मतलब समझने के लिए हाँ, तो ये है। तो नॉर्मली जब भी एसेट नई नई खरीदी होती है तो इनिशियली 2-3 साल में इट इज अ मोर इकोनॉमिक लाइफ। आप वैल्यूएशन किस हिसाब से, किस पर्पस से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू कैन यूज द इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ। अवेलेबल फॉर यूज, कितने साल तक चलेगी, और कितने साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करेगी, ये दोनों में डिफरेंस है ना। या एनी डाउट किसी को भी एज और लाइफ में? बैलेंस इकोनॉमिक लाइफ या बैलेंस यूजफुल लाइफ मतलब अगले कितने सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी, या अगले कितने सालों तक ये यूज में रहेगी। बैलेंस, सो एज ए वैल्यूअर we are taking care of the effective age and balance life, balance economic life or balance useful life, not a economic life, not a age, not a useful life। सही है। कई कहीं अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन कई स्टेटेड में, मतलब जैसे आप कंपनी एक्ट के अंदर करते हो, सो दे हैव प्रोवाइड द इंडिकेशंस कि हाउ मच यूजफुल लाइफ यू हैव टू यूज। ओके, बट वहां भी ऐसा नहीं है कि दैट मच इज, मतलब जो दिया है वही लेना है, यू कैन डेविएट, बट वहां पे आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि व्हाई यू आर टेकिंग अ लेस और मोर यूजफुल लाइफ।
rather than whatever stated in the Company Act. Okay. So useful life, many times it is just reference for the valuer, but mostly we are blindly adopt a useful life mentioned in the Company Act or wherever blindly. Okay, for us, age minus total life is equal to balance life. ऐसा नहीं होता. Okay, so factor affecting the life. Okay, so type of assets, material based asset and technology based assets. So normally material based asset मतलब जब में ये आपका लेथ मशीन है, टैंक, वेसल, रिएक्टर्स, कॉलम, ये सारे मटेरियल बेस्ड एसेट्स है. उसकी लाइफ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है रादर देन टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट. जैसे लैपटॉप हो गया, टेलीकॉम टावर्स हो गए, सीएनसी मशीन्स हो गए, प्रिंटिंग मशीन्स हो गए, ये सारे एसेट्स की लाइफ कम होती है. कम होती देन फिजिकल कंडीशंस, unusual sound, vibration, rusting, crack, etc. affect the life. Operators, skill of the operators, uh, allocation of maintenance cost by the company affect. Okay. Maintenance, preventive maintenance, breakdown maintenance, or schedule maintenance affect the life. Why we have to take again the macro identification or micro identifications? Why you have to collect the data? Because when you are going to adopt the cost approach, this matter it comes into the picture. Okay, uses. Okay, asset is used in a single shift or 8 hours per day will of course will have a more life if identical asset are used in the 24/7. ठीक है, तो बैलेंस लाइफ अफेक्ट करती है यूजेस से भी. फाइनाइट सोर्सेस मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, यू कैन कैलकुलेट द बैलेंस लाइफ अप टू द रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट गो. ओके, मैनी टाइम्स मतलब लास्ट में क्राइसिस आए थे हमारे कॉल के. आज भी बहुत सारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट शट डाउन है ड्यू टू दे आर डिजाइन बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट कॉल, imported call. And nowadays, imported call is not available or available at the higher cost, which damage the feasibility. अगर महंगा कोयला खरीदते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो कॉम्पिटिटिव में हम बेच नहीं सकते और लॉस करते हैं. फिर लॉस करने से तो अच्छा है कि प्रोडक्शन ही नहीं करें. सही है. तो बैलेंस लाइफ अफेक्ट या लाइफ को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं दैट वी हैव टू स्टडी. ओके, वी हैव टू स्टडी द life cycle, demand, supply of the product. That's a part of the macro identifications. Okay, these are also part of the macro identifications. This is also part of the macro Okay. identifications. So these are factors we have to study. Okay? Well, valuation is not just calculation of Excel. Yeah. Then three terms: historical cost, acquisition cost, book cost, and written down value and net block. Keep in the mind historical cost. What do you mean by the historical cost? Anyone? And acquisition cost, or many times is also called the original cost. The cost of purchase plus so expenses. Historical cost. Historical cost. Hmm. The cost Yeah, of procurement okay. plus expenses Good. occurred Yeah, so far. yeah. It is a good one. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उसमें? Okay. Cost of procurement plus other costs. But when asset is the purchase first time, newly asset purchase, the purchase price paid at the time of initial time of acquiring the asset plus additional cost
मेड सब्सिट्यूट टू परचेस्ड। फर्स्ट बायर ने जब एसेट न्यू खरीदा था, फर्स्ट बायर ने एसेट जब न्यूली खरीदा था, तब जो एसेट का कॉस्ट आया था प्लस सब्सिक्वेंट कॉस्ट इज कॉल्ड द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके। और एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? Initial price plus till the expenses till the time of the commissioning and installation. नहीं नहीं नहीं, हाँ, एनीवन? Yes, first is the historical cost. Okay. New asset purchased by first owner, historical cost। एक्विजिशन कॉस्ट का या ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? भाई, when asset is a purchased, not new, old asset purchased by not first, second, third or fourth or whatever owner, it is a acquisition cost या historical cost। Okay, that assume Mr. A purchase an uh, asset as a new at rupees 10,000. So it was 10,000. Mr. First A is a first owner, purchase asset new as a 10,000. This 10,000 is called historical cost. अब same asset A sell to Mr. B. Okay, Mr. A sell to at 8,000. Then this 8,000, okay, 8,000, it is a acquisition cost for Mr. B, not a historical cost। मशीन या एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट तो 10,000 रुपीज ही है। मिस्टर ए सेल मिस्टर बी को यही एसेट 8,000 में, मतलब नाउ मिस्टर बी इज अ सेकंड परचेजर, सेकंड ओनर। अगर यही चीज इफ मिस्टर बी अगेन सेल टू मिस्टर सी at 5,000, so acquisition for Mr. C will be a 5,000, but historical of cost of the asset is at 10,000. Okay, so there is a difference between the historical cost and acquisition cost or original cost.
Okay, so when you are preferring the fixed asset register, if asset is a uh, recorded is historical cost. मतलब when asset purchased as a new, it's a recorded as a historical cost. If asset is purchased as a second hand, then this cost is identified as a acquisition cost. Any doubt? Historical cost, acquisition cost. Next is a book cost. सर मतलब जो पहला ओनर है उसके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट सेम हो जाएगी। सेम यहाँ पे उसके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट सेम ही रहेगी फॉर द फर्स्ट ओनर। सेकंड ओनर या थर्ड ओनर के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एक्विजिशन कॉस्ट डिफर रहेगी। ठीक सर, थैंक यू। सही है। बुक कॉस्ट, the cost which are the recorded in the books of account to gain tax only। ओके, ऐसे जो कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में टू गेन टैक्स ओनली इज कॉल्ड अ कॉस्ट, बुक कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जो बुक में डाले जाते हैं टू गेन अ टैक्स ओनली, इट इज कॉल्ड द बुक कॉस्ट। एंड डेप्रिसिएशन इज अ एग्जांपल ऑफ योर बुक कॉस्ट। ओके, देखिए कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए डेप्रिसिएशन 100 रुपया चार्ज किया, तो इज कंपनी पेइंग 100 रुपीज टू एनी वन? कंपनी ने बुक्स ऑफ बोला भाई 100 रुपया डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस, तो ये 100 रुपया कंपनी किसी को देती है? नहीं। बट देन ऑल्सो इट इज अ चार्ज इन अ बुक्स टू गेन अ टैक्स ऑनली। भाई उसकी एक्सपेंसेस बताए हैं तो नेट इनकम कम होगी, नेट इनकम कम होगी तो जो टैक्स बेनिफिट है वो ज्यादा होगा। Okay, so the cost that is recorded in the books of account to avail gain of tax, that is called the book cost. Okay, next to terminology है। हाँ बताइए। So WDV booked by the CA is book cost. Net book value, okay, and uh, written down value। Okay, अब इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, okay, उसको डेप्रिशिएट किया जाता है ना। There's a different types of method for the depreciation. That may be a straight line method, that may be a WDV method, yeah, that may be a unit of productions method. So when historical cost and depreciation provided using the straight line method, SLM method, it is make all the net book value. Okay. So and same thing, if depreciation may provide by the WDV method, written down value method, we may call it as a written down value. Okay. Keep in the mind, these are the terminology related to the books of account. जो नए है वो लिखना है तो लिख भी दे। Okay. जैसे हमारे यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आई है। सर एक छोटा सा सवाल था हाँ कि बोलिए। जो अगर सेकंड परचेसर है, हम्म। सेकंड परचेसर है मतलब उसकी कॉस्ट में उसके एफएआर में वो एक्विजिशन कॉस्ट लिखेगा, हम्म। और तो फिर वो डिप्रिसिएशन तो एक्विजिशन कॉस्ट पे लगाता जाएगा ना सर। सही है। तो फिर उस केस में अपना फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा, डिप्रिसिएशन का हाँ बट मेथड या सर तो वो एलएम होगा या डब्ल्यूडीवी होगा। नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सेकंड हैंड मशीनरी खरीदेगा तो सेकंड हैंड परचेज प्राइस जो भी होगी
उसी पे वो डेप्रिशिएट करेगा। बट एज ए वैल्यूअर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई सेकंड हैंड मशीनरी है कि न्यू मशीनरी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में हाउ दे आर ट्रीटिंग द डेप्रिशिएशन वो वैल्यूअर का काम नहीं है। हमें को तो क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ एसेट, ईयर ऑफ मतलब पुट इन यूज। अगर उसने सेकेंड हैंड खरीदा, एक्विजिशन कॉस्ट है, और उसके रिटर्न डाउन वैल्यू वो प्रॉपरली कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग वो प्रॉपर कर रहा है, और हमको उससे कोई लेना देना नहीं है एज अ देखिए, वैल्यूअर। इज इट एज ए करेक्ट सर? वैल्यूअर उसके नेट बुक से हमें कुछ लेना देना नहीं है। मेनी टाइम्स वी हैव टू कंसीडर हिस्टोरिकल कॉस्ट when we are providing, मतलब कॉस्ट अप्रोच में, टू फाइंड रिप्रोडक्शन कॉस्ट वी आर यूजिंग इंडेक्सेशन, तब हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट की हेल्प चाहिए। बट नेट बुक की तो हमें, मतलब एज ए वैल्यूअर वी नेवर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। सर, हाँ। थैंक यू। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, ग्रॉस, क्या बोलेंगे, ग्रॉस ब्लॉक, ग्रॉस बुक वैल्यू, ये सारे एक ही टर्मिनोलॉजी है। ओके, ऑलमोस्ट सेम टर्मिनोलॉजी है जो नए जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। इट इज अ कॉस्ट एट विच एसेट इज परचेज्ड एंड पुट इज यूज। सही है। देन आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, कई बार सिर्फ बुक वैल्यू, कई बार नेट ब्लॉक, कई बार कैरिंग अमाउंट, ये सारे एक ही टर्मिनोलॉजी है विच इज रिफ्लेक्ट historical cost, acquisition cost, gross block minus total accumulated depreciation। Okay? जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लिख दीजिए, ये सारी टर्मिनोलॉजी एक ही है। हम कॉस्ट अप्रोच में भी डिस्कस करेंगे दोबारा। Okay? तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइव पांच टर्मिनोलॉजी है: एक्विजिशन कॉस्ट, बुक कॉस्ट, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। नेट बुक वैल्यू एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल एसेट का जितना भी डेप्रिशिएट होता है वो डिडक्ट करने के बाद। ये सारी टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। या एनी डाउट? Item to be treated as a plant or not a plant?